the final round of the beauty pageant. I request the event conveners to do the needful. We have a final list of the beauty pageant contestants. So now we'll be announcing the badge number of the contestants. They all have to be ready for the grand finale. So here we have the list. The first finalist we have is badge number 5. The second contestant is with badge number 8. Badge number 8. Please, if you are present here, you can stand. The contestant with badge number 8. Yes. The third final contestant we have is with badge number 14. Everyone please give a big round of applause to all these finalists. Now the next contestant is with badge number 15. And the last finalist we have is with badge number 16. So everyone please keep your hands together and please give a big round of applause to all these finalists. I request our judge, Ms. Tejaswini Goyal ma'am, to ask a question to the first finalist. Which language would be comfortable for you? मराठी थोड़ा मुझे कम आती है, तो I can ask you in Hindi. Yes. तो आपको क्यों लगता है कि आप सब कंटेस्टेंट से अलग हो? भाइयों और भाइयों, सेनी मारो, नमस्कार। गुड इवनिंग। मेरा पूरा जो कॉस्ट्यूम है वो सबसे अलग है। मैंने लमानी का कॉस्ट्यूम वेयर किया है। तो और मेरा वॉक भी बहुत अच्छा था और मैं बहुत अच्छी भी लग रही थी, इसलिए मैं अलग पैसे ले लूँगा सबका कंटेस्टेंट। Thank you. Thank you, judges, and thank you. Now we have our next contestant from batch number 8. Now I request Kainat ma'am to ask a question for our next finalist. ऐसी आप में कौन सी चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है? Singing ಮೇಡಮ್. Singing, you can sing. मुझे दासರ ಪದಗಳು करोके जैसा आपको ऐसे लगता है कि आप सबसे यूनिक हो इसमें? थोड़ा थोड़ा। Yes, that's. Thank you. Thank you. I request our contestant number 14. Question. Good evening. Yeah. Who is your role model? My role model is my mom. Because the inspiration what I get from her, it's truly amazing. Good answer. Again, you are talking about another woman. Yes. Because it's all because of her
उसके वजह से मैं यहाँ पे हूँ। टोटली मैं बैकवर्ड। I request Hannah ma'am to ask a question. लुकिंग लाइक मराठा मिर्ची, तो आप में तो कुछ कमी नजर नहीं आती, बट आपको ऐसी कौन सी कमी लगती है खुद में जो आप चेंज करना चाहोगे? वन वीकनेस। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। आपने जैसे कहा कि बहुत अच्छा लगा मुझे, एज इज जस्ट अ नंबर, बिकॉज इवन आई बिलीव द सेम. So why do you think कि एज इज जस्ट नंबर? बिकॉज व्हेन एवरी टाइम एक लेडी को कॉन्शियस बनाते हैं घर वाले कि आपका एज हो गया, आप अभी सास बनने वाली हो, अभी आप डॉटर इन लॉ बनने वाले हो, तो आपको क्यों ऐसे क्यों हमको बिलीव नहीं करना? आप क्यों ऐसे सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर? क्योंकि मुझे तो लगता है एवरीबडी हैज अ किड इन देयर हार्ट. एक्चुअली हम लोग किड को अगर जिंदा रखेंगे ना तो इवन 60 will be 16 only. So many people ask me why you come in fashion industry after 60? Because after 60 I was working in a bank. I was working all your money. Earlier also I have a passion to this fashion industry, but I have no chance because like Madam told, I have to maintain my family, my bank job and all other jobs, everything. So I have no time. But I thought after retirement, let him enjoy my life. When Max Total person has started his business in 60 and he is flourishing. Amitabh Bachchan has started his second inning in 60. Why I not start my second inning? महिला दिवस के उपलक्ष्य में पिछले 2 दिनों में यानी कल और आज इन 2 दिनों में जैन हेरिटेज द केम्ब्रिज स्कूल के इस प्रीमाइसेस में द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के निर्देशन में महिलाओं के लिए कई सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जो एक्टिविटीज, जो गतिविधियां, जो कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर चलाई गई, उसकी कुछ झलकियां हम आपको यहाँ पर बेलगाम की ओर से ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, दोनों की धूप के आगे खुशियों के साए हैं। ये शेर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पिछला जो वर्ष 2020 शायद ही अपने जीवन में कोई भूल पाएगा, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है, कोविड-19 जो पैंडेमिक पूरी दुनिया में जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, और उसमें भारत की हालत इस स्थिति में क्या हो सकती थी हम सिर्फ सोच सकते हैं। और ऐसी कठिन परिस्थिति में भी जिन्होंने हिम्मत न हारकर आगे बढ़कर समाज में एक योद्धा की तरह काम किया, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे सिक्योरिटी सेक्टर हो, या कोई सामाजिक व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में हमारे डॉक्टर्स, पुलिस, नर्स, सफाई कर्मचारी इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो उन्हीं कुछ सेक्टर से हम लोग यहाँ पर कुछ लोगों को बुला रहे हैं जिन्हें भारत स्काउटिंग गाइड की तरफ से कोविड वॉरियर्स का अवार्ड दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए
उन सभी महिला कोविड वॉरियर्स के लिए, क्योंकि इसमें विशेष रूप से हम उन लेडीज को, कोरोना वॉरियर्स में उन लेडीज को यहाँ पर प्रोत्साहित करने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही अहम भूमिका इस कोरोना पैंडेमिक के समय में निभाई थी। हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ पर उपस्थित है दो गेस्ट, दो वॉरियर्स। डॉक्टर तेजस्विनी पाटिल, प्लीज आप मंच पर आ जाएं। डॉक्टर तेजस्विनी पाटिल RBSK मेडिकल ऑफिसर के तौर पे ये कार्यरत है। इनके साथ डॉक्टर नीता भोसले, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। ये भी RBSK मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त है। दो और हमारे कोविड योद्धा जो आज भी अपनी ड्यूटी पर है, जो यहाँ जैन हेरिटेज द कैम्ब्रिज स्कूल के डायरेक्टर मिसेस श्रद्धा कटवड़े मैम और चीफ एडमिन मिसेस आमी जोशी मैम आए और इन्हें पुरस्कृत करें कोविड वॉरियर्स के रूप में। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इन सबके लिए। समाज की वीरांगनाओं ने, जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने बहुत सारे कार्य यहाँ पर किए हैं। इसी पैंडेमिक के दौरान SSLC एग्जाम्स भी जो आए थे उन सेंटर्स में जाकर के और इस पैंडेमिक सिचुएशन में कई मिसेस MC डिसूजा, गाइड कैप्टन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स बेलगाम एसोसिएशन, इनका सम्मान किया जा रहा है। साथ में SS कमरार, गाइड कैप्टन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन बेलगाम, मिसेस GV कट्टी, गाइड कैप्टन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स बेलगाम एसोसिएशन,
are nurtured, groomed and given all possible opportunities to grow and bloom. This is a much awaited event of today's function, as it gives the written to the efforts. It is moment full of joy, a moment full of about pride and a moment of celebration. It gives a sense of achievements and a sense of responsibility towards fulfilling further commitments. Now is the time we acknowledge and encourage the talent of these beautiful and enthusiastic ladies who made this event a real success with their wholehearted participation. हमारी इन एक्टिविटीज में ब्यूटी पेजेंट ये जो एक्टिविटी जो कॉम्पिटिशन यहाँ पे किया गया था उसके प्राइज अनाउंसमेंट्स हम यहाँ पे कर रहे हैं. It's not about being the best, it's about being better than you were yesterday. Each lady who walked the ramp displayed confidence, and that's what makes the difference. You, my beautiful ladies, have the courage and the passion to achieve the unexceptional glory. You, dear women, are the perfect combination of princess and warrior. We all are winners in our own battles, and we shine and smile to prove ourselves each day. Here we have the results of the beauty pageant. Cheer up, put your hands together for the finalists. Are you all excited to know the winners? Yes? Any guesses for the best wacky introduction? Absolutely, yes. The best comic introduction के लिए प्राइस है 2,500 रुपीस का कूपन फ्रॉम उदय ब्यूटी वस्तु भंडार की ओर से. एक बार जोरदार ताली हो जाए. हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे आज के चीफ गेस्ट मिसेस कर्नल पद्मिनी मैम और हमारे स्कूल के डायरेक्टर मिसेस श्रद्धा खटवटे मैम वे आए और उन्हें पुरस्कृत करें. Cheer up, ladies. She really deserves a round of applause because her introduction was fabulous. The best comic introduction. 2,500 rupees coupon of Uday Beauty Vastu Bhandar. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए. So we have the second runner-up, women of substance, is Mrs. Contestant number 15, Shubhangi Bhattacharya. जोरदार तालियां हो जाए. Shubharambh and 1,000 package of Javed Habib and also gold gym membership. जोरदार तालियां हो जाए सेकंड नंबर के लिए. This was the second number. The first runner-up, women of substance, is contestant number 8, Rashmi Kaidiwa. So the winner of today's beauty pageant is contestant number
16 years, Mrs. Rekha Shivgaonkar. विनर्स के लिए 5,000 रुपीज का कैश प्राइज बाय शुभारंभ, 2,000 रुपीज का पैकेज और जावेद हबीब और गोल्ड जिम मेंबरशिप, ये प्राइज इनको दिया जा रहा है। जोरदार ताली हो जाए आज के ब्यूटी पेजेंट के लिए। Now I would like to request our today's beauty pageant judges, पद्मिनी मैम, इनसे कि वे हमें मोमेंटोस दे करके पुरस्कृत करें। जोरदार ताली हो जाए हमारे जजेस के लिए। Share the stage with the judges for a group photo. To do, an attitude determines how well you do it. So without further ado, we will start with the prize distribution for the badminton singles competition. Who do y'all think won the first prize? No one? Okay. Well, the first prize goes to Gauri Mohitek. Big round of applause. The second prize goes to Miss Shivani Tendulkar. बैडमिंटन के लिए जो प्राइजेस यहाँ पे दिए गए हैं, फोर्थ प्राइज के लिए गोल्ड जिम का मेंबरशिप प्लस वन बॉटल, थर्ड प्राइज गोल्ड जिम मेंबरशिप प्लस 500 रुपीज कैश प्राइज दिया जा रहा है। सेकंड And the fourth prize goes to Bharati Secretary. हेड बॉक्स इसके बाद के इवेंट है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बैडमिंटन के लिए फर्स्ट प्राइज 1,500 रुपीज का कैश प्राइज बाय देव कोटा एंड गोल्ड जिम मेंबरशिप प्लस 2,500 रुपीज वर्थ किक बैक बाय भूषण अकेडमी। फोर्थ प्राइज के लिए गोल्ड जिम मेंबरशिप प्लस beautiful role model. I would like to thank Mr. Bartesh sir, Miss Shweta ma'am, Miss Gauri ma'am, Miss Roshni ma'am. 100 rupees cash prize by Wave Kota, fourth prize. रंगोली एंड पेंटिंग, ये सारे जो इवेंट्स यहाँ पे हुए सब अभी ओपन है। आफ्टर दिस प्रोग्राम आप सब लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं कि लोगों ने क्या किया है। और मैं अनीता कलमनी मैम को बुलाना चाहूँगा। स्पेशल प्राइज कंसोलेशन 500 रुपीज कैश बाय वेव कोटा एंड केक फ्रॉम Portuguese एंड गोल्ड जिम मेंबरशिप।
hamburger by Pick and Munch, gold gym membership, and a beautiful cake from Montinis. जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, सभी विनर्स के लिए जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट करके प्राइजेस हासिल किए हैं। And the first prize goes to Miss Pankaja Patravali. And the first prize is Titan Watch. Watch company, one gift hamper by Pick and Munch and gold gym membership. Pankaja Patravali ma'am. First prize in hand box. First prize is Titan Watch by Hanuman Watch Company. One gift hamper by Pick and Munch and gold gym membership. I would like to thank Miss Priya ma'am, Miss Varsha ma'am, and Miss Deepika ma'am for organizing this wonderful event. आर्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवाः, इस संस्कृत की उक्ति को उन्होंने जो कुछ भी बोला ये पूरा अर्थ उसका है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने जो जो बातें कही महिलाओं के जो बहुआयामी जो व्यक्तित्व है उसको उन्होंने उजागर किया। थैंक यू सो मच मैम। अब इस कार्यक्रम में आगे मैं बुलाने जा रहा हूँ आज के हमारे विशेष अतिथि मिसेस लीलावती जी हिरेमठ, वे आए और 2 शब्दों में हमारे सभा को संबोधित करें। ಮೊದಲಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೋಮತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆನ್ ದ ಈವ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್, Colonel Padmini Srinivas Madam, Shraddha Kadvate Madam, my dearest friend Prabhavati Patil Ma'am, Chief Admin Amin Doshi Ma'am. But I feel the audience is very clear. There are very curiously waiting participants who are about to receive the prizes. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಹೋದರರಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್, ಐ ಫೀಲ್ ಸೊ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮೀ an opportunity to listen to ಪದ್ಮಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ನಂದೇನು ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್. ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ದಟ್ goosebumps has come, no, it is still like that only. The list of her achievements are always inspiration for her. So ನಾನು ಎರಡೇ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಓದುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ನನಗೆ ಹತ್ರ ಅನಿಸ್ತು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಅನಿಸ್ತು. ಒಂದು ನಮ್ಮ
ಒಂದು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ನೈಜ ಪ್ರಗತಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. That is nothing but opportunities for the women. She should openly make use of those opportunities. ಇದಾವೆ, we should make use of them. ಮತ್ತೆ ಆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೈಜವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ರಂಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸನ್ಮಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಗನ್ಸ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ವೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಟಿಲ್ 5:30 ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ವಿದೌಟ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್, ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋದವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಾರಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ, ನನಗೆ ನೀವು 500 ಜನ ಪುರುಷರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೈ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಗಿ. ನಮ್ಮ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಚಂದವಾದಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಾವ್ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವು, ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100% ನಮ್ದು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತದ ಅರ್ಥ. ಬಹುಶಃ 2 ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದರಂತೆ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನೋಡ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾನು ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ while I attended the interview of my KES exam, ವೈವಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು, one aged person, educationist, he asked me, ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಇದು ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. I simply said to him, I answered to him, ಅಷ್ಟೇನಾ ಸರ್, ಈಗ ಉಲ್ಟಾನೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಪುರುಷ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಮೊದಲು, ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ದೇಶನೂ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನೇ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲು ಗುರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿ ಜನನಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಡಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್, ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು watch continuously Facebook and other things. The e-learning activities, virtual activities you have given for your children is really wonderful. Bahashtu virtual activities. In fact, I am continuously appreciating it and I am even sharing it to other groups to take it as a model. So, I am kandita khushi ಇದೆ. Jain Heritage and all its institutions are doing well.
and even they are always joining their cooperative hands with the education department in exhibiting so many activities. So in that regard, you all are blessed to be in these institutions ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇಡಮ್ being a lady, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇಬ್ರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಮೀ. ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ನಂದು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಟ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ರೆಗಾರ್ಡ್ ಇದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನಗೆ ಕರೆಸಿ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. Those are wonderful examples for us ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ congratulate her and all of you. I'm very grateful to Bharat Scouts and Guides Belgavi Association and the Jain Heritage Cambridge School for giving me an opportunity to be a part of your celebrations of this International Women's Day. Why I said yes, I consented to be the chief guest for this occasion is I was actually with the topic you had selected, women in leadership. When Pallavi came and told me it's women in leadership, I said yes, of course, definitely I'm going to make. Because once upon a time, I was a little girl like these kids over here, and I was inspired by somebody who came to my school and delivered a similar speech. सबसे पहले I'll tell you one thing. When I speak about the role of a woman, are you all familiar with Tin Ad Khan? You write it as Stitch Nat Hand. You would have read the books. उसमें एक कहानी में वो कहते हैं जब वो छोटे थे, he's a Zen master, वो अपने मास्टर के पास जाके पूछे आप he asked master have you seen the bodhisattva? तो उनके मास्टर ने बोला yes I have seen and I'm sure you would have also seen. Now this small boy says कि नहीं मैंने तो देखा नहीं, I have not seen. He says no. How do you visualize your bodhisattva? Now the little boy said master he would have 1,000 hands. He's capable of doing so many things. So the master says exactly. Haven't you seen anybody doing so many things together? Then the little boy thought of his mother. He said, my mother is Bodhisattva. She has 1,000 arms. In fact, we just a few minutes ago we saw the Rangoli and the paintings, and I must say one Rangoli depicted the same thing. A woman with so many arms. She's holding a stethoscope, she's holding a basket for shopping, she's holding a mobile, everything you name it. Beautifully done, which captures this principle or this essence when we say a woman is a bodhisattva, a multiple faceted person. Among so many facets, it's very difficult to wind up a woman's faces in a short time. I'll keep myself limited to leadership. We know लीडरशिप एक ऐसे कला बोलेंगे या स्किल बोलेंगे जो औरत को इनहेरेंट है, अपने आप ही आता है. हमने हमारे मदर्स को देखा है, हमारे दादी नानी को देखा है, वो भले ही स्कूल नहीं गए होंगे, बट कैन एनी वन ऑफ यू से कि दे वर नॉट लीडर्स? हमारा मेट्रियार्कल फैमिलीज जो होते थे, हमारे नानी या दादी would rule everything. In fact, I remember my mother watching a serial a few years ago, Puttagovri Maduve, जिसमें एक अज्जी was controlling everything. So leadership skills need not be taught. It is inherent to a woman. They led their homes flawlessly. If हम अभी समाज विज्ञान में पढ़ते हैं, family is a unit of the society, isn't it? All our children who are reading social studies. So if a family is led by a woman, then she is a leader. So every woman is a leader, I must say. Ancient India had a lot of leaders. Ancient India के time पे there was no distinction between a man and a woman. For every Janak Maharaj we had a Gargi or a Maitreyi. For a Bhaskaracharya we had a Leelavati. But somewhere down the lane
it got diluted. It was off track. And we have reached an unfortunate situation where women has to feel the need to be empowered. अपने आप से परिचित होने का एक प्रयास चल रहा है. Most of your teachers here, you will agree, आप जब छोटे क्लासेस में है, प्राइमरी में, you will see the children. एक चीज आप बताइए, क्लास में फर्स्ट कौन आता है, लड़का या लड़की? छोटे उम्र में लड़की. Everybody knows what teachers will agree. जब बच्चा पैदा होता है, ज्यादा चटक कौन दिखता है, लड़का या लड़की? लड़की. जब सपोज टाइम से पहले भी बच्ची पैदा हुई है या लड़का पैदा हुआ है, हमारे घर में जो बुजुर्ग है वो बोलते हैं लड़की है ना, कुछ नहीं होगा, ये बच जाएगी. लड़के के लिए ये बात नहीं कहते. Nature has made us like this. The girl child thrives. The girl child has a better immunity. The girl child has better intelligence. The girl child is bold. अगर एक छोटे बच्चे 5 साल के बच्चों का एक झुंड जा रहा है, उसमें लड़की आगे जा रही होगी, लड़के डर डर के पीछे आ रहे होंगे. लेकिन ये बढ़ते बढ़ते कहीं खो जाते हैं. आप अगर गणित की भी क्लास कर रहे हैं, छोटे बच्चे पे लड़की पूरा 100 में 100 लेगी. लेकिन यही लड़की जब 10th में आ जाती है, 12th में आ जाती है, हम ही लोग उनको बोलते हैं बेटा मैथ्स लड़कों के लिए ठीक है. मे बी इट इज नॉट कॉन्शियस थिंग. हम बिना कुछ स्टीरियोटिपिकल विचार होंगे, हम सोचते हैं नहीं लड़के के लिए गणित का हो सकता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि वो बचपन से ही जिस नेचर से वो पैदा हुई है तब से उसके पास ये सब है. So it is the social conditioning which creates a sense of inadequacy. लड़की खुद ही hesitate करेगी. आप लड़की को rarely, I'm not branding ये ऐसे वैसे करके, but तकरीबन जो देखा जाता है, जो पाया जाता है, लड़की थोड़ा जैसे बढ़ेगी तो थोड़ा एक कदम पीछे रखेगी, भले ही कोई उससे कुछ कहा है या नहीं है. This is all because of the social conditioning which we are subjected to. बहुत सारे रिसर्च दिखाया है. अभी अफसोस की एक बात बताती हूँ मैं, इतने कॉम्पिटेंट हम सब लोग अभी यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, आई एम श्योर यू वुड ऑल बी गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू योर सन्स एंड डॉटर्स. सब यही एजुकेशन, यही स्कूल में पढ़ेंगे. लेकिन ये देखा गया है, research has shown us among the top 500 companies of the world, it is only 4% of the companies who have women as CEOs. And those 4% are doing so well, be it Indira Nooyi, be it Kiran Mazumdar-Shaw. They are leaders, they are globally recognized names. तात्पर्य यह है, अगर लड़की जब करती है वो परफेक्टली करती है, लेकिन वो बाकी 96% पीछे रह जाते हैं. इसका ये मतलब नहीं कि the girls or the women are incompetent. It is just the fact that obstacles are less for less competent men, whereas obstacles for a competent woman would be much more. In the recent past, lot of public interest has been generated. Women empowerment, हर जगह पे हम women empowerment के बात करते हैं. हमारे political leaders भी यही कहते हैं. Most of you have seen all the videos, some of them which are very comical also. There are too many suggestions. कि क्यों एक lady, why can't she become a good leader? Then people opine. Lot of suggestions हैं. एक बोलते हैं like women are not inherently aggressive, they cannot be good leaders. It's not a right suggestion actually, because management research जितने भी इसमें स्टडीज हुआ है, क्वालिटीज कुछ रिकॉग्नाइज किया गया है कि टू बी अ गुड लीडर, टू बी अ एफिशिएंट लीडर, टू बी अ इफेक्टिव लीडर, यू नीड टू हैव these qualities, and all these qualities are inherently present in a woman. I'll tell you about those qualities also. It is not that if men have the top roles, they must be doing something right. No. It is that we fail to see the performance of women
women do have certain limitations in the sense, जैसे हमने बोला 1000 बाहु है, बाजू है, तो 1000 काम हो रहा है। जब नेचर में डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड वुमन आप देखते हैं, मैन वॉज द प्रोवाइडर, वुमन वॉज द नर्चरर। वो प्राणी जगत में भी वही देखते हैं। जो नर्चरर है, जो घर पे बैठी है, उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ घर पे बैठी है, हर डेंजर की तरफ उसकी आंखें खुले, उसके बच्चों का रक्षा उसकी जिम्मेदारी है। अभी बीट सील हो या टाइगर हो, वो सिर्फ he gets the meat home, but the rest, the management is left to the female species. We have to just look at the world and then we understand. Harvard Business Review, it's a very famous journal है। इन्होंने 2020 अप्रैल इशू में इसी सब्जेक्ट पे बात किया है। They say when we talk of women empowerment or when we say leadership in women is not optimal, he says no. They did a study. Harvard University has done a study, and they came up with certain findings which were very surprising. They say, "Gosh, if a man could take some lessons in management or leadership from women, we would have better leaders in the world." It may be like you have so many blunders being committed by top people, and invariably most of them are men. Why? Because they lack a certain qualities which are so vital, but which are found abundantly in women. And Harvard Business Review suggests it would be very beneficial if a male CEO or a leader would adopt these traits. So, it's very interesting. I'll take a minute or two and just tell you. सबसे पहले बोलते हैं, don't lean in when you have got nothing to lean about. It means if you imagine एक मेल लीडर है, अभी आप लोग भी बोल रहे थे like I have whatever I have achieved, probably like Mrs. Shraddha was also saying you don't look like that. Yeah? That is the USP of a woman. We don't look like that. And achievements, you know, boldness, self-assertiveness, women में नहीं है बोलते हैं, but actually वो है, लेकिन it is not blatant or just thrown about. Whereas in a male, it has a tendency to become arrogant, but in a female it doesn't happen. The research says females believe in being good at something and not just being a aggressive person. So when you have to be good at something, you mean you're focusing on some quality. It could be intelligence, it could be curiosity, empathy, integrity, or coachability. Abhi people who are dealing with teenagers, you will say it is easy to make a teenage girl see your point rather than making a teenage boy. That is because they are amenable to coaching. And this is one important quality which a leader should have. A leader should believe, I am not God. I am amenable to suggestions. I may be wrong and I will welcome if somebody is trying to rectify me. And most of the women are programmed this way. They are self-assured, but they are not overconfident. इनकी बात सुनकर संस्कृत पढ़ाता हूँ स्कूल में, तो महिलाओं के बारे में जो कुछ भी उक्तियाँ कही गई है उनके बातों से झलक रही है। और जननी यानी माँ और जन्मभूमि यानी जो हमारी जो जन्मभूमि हमारा जो देश है, ये स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। ऐसे माँ और माँ के अलग अलग रूप, एक स्त्री के अलग रूप, इनका विश्लेषण यहाँ पे मैम ने किया। और साथ में उन्हें याद दिलाया था, पहले अपने आप को याद दिलाया था कि आप सब लोग किसके लिए वेट कर रहे हैं। तो आज के जो प्राइजेस थे वो हम देने वाले हैं। शुरू में मैंने आपको सभी स्पॉन्सर्स के नेम बताए हुए थे, और यहाँ पर साथ में मैं पंचामृत होटल, भूषण एकेडमी और शुभालंकार, ये हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। जोरदार तालियों के साथ हमारे इन 3 स्पॉन्सर्स का भी स्वागत करें। और अब मैं सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे सामने आकर विराजमान हुए। Jain Heritage, the Cambridge School,
जैन हेरिटेज के प्रांगण में एक नए शिक्षा के स्तर को यहाँ पर लेकर के आने की कोशिश कर रहा है। तो जैन हेरिटेज द कैम्ब्रिज स्कूल की कुछ विशेषताएं, कुछ झलकियां हम आपको थ्रू द वीडियो यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है